ना भी आप बोल लो कि शादी 2 जन की होती है, नहीं गाइस, शादी एक दूसरे की फैमिली के साथ होती है। Whether you are going to stay with your in-laws or stay separate is something that you need to establish before getting married. Consider that your marriage is like a corporate office. You need to talk about children. Hi Hello guys, guys. this is Vishaka and Divesh and welcome back to yet another video. This video is really close to our heart because ये हमारी बहुत सारी पर्सनल चीजें आपके सामने रखेगा, वो साइड आपके सामने रखेगा जो आप यूजुअली रील्स या शॉर्ट्स या फनी वीडियोस के थ्रू आप नहीं देख पाते हो. Yes. You guys keep on asking us, do we not fight or do we not have arguments? Disagreements में क्या करते हो आप लोग? You keep on asking these questions in our DMs, in our comments. So this is the video. There's a lot of work that goes behind what you see online. आज उसका एक हिस्सा आपके साथ शेयर करने वाले. Yes. So the video topic is things you should discuss with your partner before you get married. तो ये अगर चीजें आपने डिस्कस नहीं किया है तो रुक जाना, डिस्कस करना, फिर शादी करना या फिर सेटल डाउन हो जाना. And also ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए नहीं है. Yes. Whoever is single, whoever is in a relationship, probably this is the best time to have this discussion. अगर आपको लग रहा है कि oh yeah, this relationship looks a little bit serious now, and there's a way where you can have this conversation, then you should please do. These are the conversations that we've had before we got married, and ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद झगड़े नहीं हुए, बहुत हुए. कल रात को हुए, होते ही रहते हैं झगड़े, बट वो जो इम्पैक्ट है, जो सरप्राइज एलिमेंट है, वो थोड़ा माइनस हो जाता है. ऑल्सो इट इज नॉट लिमिटेड टू अरेंज मैरिज, लव मैरिज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बुक एंड पेन ले लो, कॉज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम पॉपकॉर्न नहीं बोल रहे हैं, आज हम बुक एंड पेन बोल रहे हैं. Yeah, because there is so much to take notes of. Also, just FYI, we are not therapists. This is our experience which we are keeping right in front of you, an open book, our story, so that this might help somebody in your circle. In your friend, relatives. Yeah. जिसको भी help लगे तो we will be grateful. If this video could just help one person also, we'll just be more than happy. Yeah. कि this is successful then. Yes. So let's start. So the first thing is roles and responsibilities. ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर के साथ. इसके बिना I don't think we should go ahead, क्योंकि हमने भी ये डिस्कस कर रखी थी सारी चीजें. हमने एक्चुअली टिश्यू पेपर पे डिस्कस की थी क्या? नहीं, वो हमारी मैरिज प्लानिंग थी. So yeah, we discussed it verbally क्योंकि बहुत जरूरी था. We were coming from a very different background, different beliefs, different values. So दोनों को एक पेज में आने के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी था, जिसमें से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना ही होगा that the first initial years of marriage are the toughest. हमको पहले लगता है ये चल क्या पका रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा. We used to think like that, but it's not. मतलब it's very true because it's been 4 years that we are married now, but the first 2 years were the hardest for us. And सबसे बड़ा जो चीज था ना उसमें, जिसमें हमारे fights होते थे, वो थे हमारे roles and responsibilities के division ठीक से नहीं हुए थे. So what do you mean by roles and responsibilities? Like for in our case, Divesh looks everything in the kitchen. राशन से लेके कल क्या खाना बनने वाला है. See, there's again like roles and responsibilities के नीचे ये भी होता है कि whether you're gonna hire a help, a cook or a maid दीदी. This is also something that you need to discuss beforehand. Firstly, to discuss whether you're staying with your in-laws or nuclear. Yes. उसके बाद आपको समझेगा कि कौन house help होगा, कौन cook होगा. So that you get a lot of clarity that अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फिर lot of things are taken care of, but उसमें भी अपना एक चैलेंज है which you need to discuss. अगर आप अकेले रह रहे हो तो as she said, hire somebody and then your work gets sorted, but discuss. First and foremost, as you have to discuss this, plan it out, and then move on with the next topics. Also, like even if you hire help, the person is not responsible for ration, right? So ration is something that Divesh has to, or probably I have to keep the fridge restock it, keep it fully stocked, decide what's going to be cooked the next day. This is paying bills, looking after petrol, looking after the खर्चास, वो सारी चीजें प्लानिंग की. मैं जिसमें अच्छा हूँ या ये जिसमें अच्छी, जैसे घर की सफाई, इंटीरियर्स, एस्थेटिक घर को दिखाना इज हर, शी डज इट रियली वेल, कूडोस टू हर. फिर मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे ये पर्दे लगने चाहिए, वहां पे और दरवाजे पे वैसे तोरण लगेगी, या फिर यहाँ पे फैन में ऐसा कुछ रेगुलेटर लगेगा. नो, दैट्स हर बुक, लेट हर मैनेज दैट बुक. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मैनेज द किचन रियली वेल. सो मैं ग्रोसरीज, मसाले, बर्तन, सारी चीजें जो करना है, कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, सो वो सारी चीजें मैं कर लेता हूँ. मुझे अच्छा लगता
है, so I manage that part. But दोनों में 50-50% रोल्स डिवाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होनी चाहिए. You know, ऐसा होता है कि कई बार मैं सोया रहता हूँ या मैं थका होता हूँ या मैं बीमार हूँ कल को, तो अगर कुक आ रहा है सपोज, तो शी कैन मैनेज ऑन माई बिहाफ जस्ट फॉर अ डे और टू. बट ऐसा है कि वो प्राइमरीली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अगर मुझे बोला जाए कि घर की सफाई या एस्थेटिक करना है, तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी. आई कैन नॉट मैनेज. मैं बिस्सू के लेवल का साफ सफाई नहीं कर सकता. मैं बोलूंगा, मुझे बोलोगे आप कि मैं एक चीज पे यहाँ पे रखना है, वो चीज वहां रखनी है, तो मैं वो रख दूंगा, रट्टू पोपड़ जैसे रख दूंगा. आप बिस्सू ने बोला कि वहां चीज रखनी है. आई डोंट come from that things where I can keep things pick and fine. She manages really well. What Devesh exactly said, that you should know your strengths. For example, my strength is not kitchen. I would not understand कौन सा मसाला. I don't know कांदा कितने का मिलता है, guys. Thank you for that. कितने का मिलता है? Oh shit. Did I just put myself into a situation? कितने का मिलता है किलो? नहीं, एक कांदा कितने का मिलता है? एक कांदा कैसे मिलता है? अरे तो किलो ही पूछूंगा ना यार. 60 rupees? You are थोड़ा सा आगे पीछे. अभी 80 रुपए चल रहा है. What? बट कम ज्यादा होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई डिमांड. या पावा कितने का मिलता है मिस्टर? छोटा. What do you mean by pawa? क्वार्टर. Of what? विस्की. अच्छा, oh, what is the brand? ब्लेंडर्स प्राइड. 200 rupees. ये बता दिया इसने. Is that correct? Rubbish, चल. Did I do it right? Oh no. I got scared. I'm just I was messing like, with अगर you. तुक्के में सही हो गया तो लोग तो मुझे बेवड़ी समझेंगे. So know your strengths between the couple, between your girlfriend and boyfriend. Know कि क्या कौन better handle कर सकता है, and then allocate those. Yeah. ऐसा भी हुआ है कि हमने ये डिस्कशन कर चुके थे हम. Yeah. फिर भी हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में we have fought so much. Yeah. If अगर हमने ये डिस्कशन नहीं किया होता तो प्रॉब्ली वो फाइट बहुत ओवर होता. It could have led to other things. मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगली थिंग्स, मतलब हमने छोटी छोटी बात पे स्नैप करते थे. Yeah. कि ये किधर है, ये क्यों है इधर, ये क्यों है, ऐसे स्नैप बहुत हुए. Yeah. बहुत. I think गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहना is very easy because आप nitty gritties में नहीं घुसते, आप साफ सफाई में नहीं घुसते, एक दूसरे का अगली साइड या फिर एक दूसरे को मेटाफर है नेकेड नहीं देखते. मतलब you don't see all of the characteristics or traits for that person. As soon as you get married, you start seeing, मतलब वो washroom में है, आप kitchen में हो, and then there is some camaraderie happening. तब You जाके start noticing the little things. Yeah, वो little little things ना कभी कभार irritation भी हो जाती है. So you have to go through those things and deal with all of these things in very loving manner because he and she is a part of that house. Yeah. So आपको उसको भी समझना पड़ेगा, अपने आप को भी समझना पड़ेगा because why fights are happening, why marriages are very tough in the start of the years, because you are coming from some values, some conditioning, some baggage, she is coming from some baggage. So उसकी अपनी सीखी सिखाई हुई उनके माँ बाप से कुछ चीजें ले लेते हैं, हम अपने बड़े लोगों से कुछ सीखा, एक फैमिली से कुछ ले लेते हैं. So we try to just use it in our marriage. और वो जब ये अलग ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्कशन होती है. बट ये ध्यान में रखना है कि ये सब होंगे. यू हैव टू सॉल्व इट इन अ वेरी लविंग मैनर. यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. यू कैन नॉट स्नैप. ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आप प्यार से समझ लो एक दूसरे को, बट डोंट ट्राई टू स्नैप. क्या स्नैप करोगे, झगड़े होंगे, चीजें बिगड़ेंगी दोनों में, आप वापस जोड़ नहीं पाओगे. सो जोड़ना बहुत जरूरी है एक दूसरे को. Exactly why this discussion is really important. Yes. And then now let's move on to the second pointer, what you have to discuss before you plan on getting married. Your finances and your goals. Very important, guys. Firstly, you are supposed to know each other's salaries, how Yeah. much you draw monthly, just or any business or whatever. Yeah. Know each other's finances. You know, whether you are double income people or you're going to be a single income people, Yeah. or how is it going to be. Just know the dynamics. Everything firstly depends on the discussion whether you are going to stay with in-laws or you're going to stay separate. तो इस पे तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है. If you've decided whatever, still you're supposed to know each other's finances. You're supposed to know what is the kind of expense that you expect after you get married. Yes. मेड दीदी का खर्चा होगा, या आपके कुक का खर्चा होगा, या आपके कोई रेंट है, Yeah, या if you're कोई renting out a place. you know there's furniture involved, there's electricity involved, there's gas bill, there's water bill, जो भी bills है वो Yeah. सारे phone bills, you know. AC, fridge. अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये सब चीज अकाउंटेबल करना चाहिए सबसे पहले before even you start to. No, get even if married. you're staying with your in-laws, this discussion is regardless of however you stay. Yeah. Finances needs to
be discussed. अगर बिस्सू है वो 50 रुपए कमा रही है और मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ, तो 100 रुपए हम हमारे हैं, Yeah. ये घर पे ला रहे हैं हम, ये किटी है 100 रुपए की। Yeah. अब 100 रुपए को आपको कैसे डिवाइड करके खर्चा करना है, दैट इज येट यू हैव टू प्री डिस्कस थिंग्स कि इस तरीके से होंगे। मेजर खर्चे आप ले लो, मिसलेनियस खर्चे आप निकाल दो। मेजर खर्चे क्या होने वाले हैं, वो घर के खर्चे में आप एक्सेल शीट बना लो, स्प्रेडशीट बना लो, उसमें सारी चीजें, बिकॉज हम ये करते हैं कि हम सारी चीजें महीने के 1 तारीख या 2 तारीख को हम एक्सेल शीट बना लेते हैं, हम सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि बिस्सू ने लाए 50 रुपए, देवेश ने लाए 50 रुपए, एंड देन वी डिवाइड जितने बचते हैं, एंड देन व्हाट वी मेक श्योर दैट कि वी पुट इट इनटू सेविंग्स में बहुत डालना बहुत जरूरी है, बिकॉज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्या चाहिए, ट्रैवल कि आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं साल के, बेस्ड ऑन योर डिपेंडेंसी, कि उस पे आपको उतने सेव करने की, चलो 50,000 रुपए हमें ट्रैवल के लिए सेव करना है, हमें इमरजेंसी फंड चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड्स। हमने भी बहुत टाइम लगा दिया इमरजेंसी फंड्स को जमा करने में। मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप लिख के कर रहे हो, सो दैट लिखते हो ना तो आपको याद भी रहता है कि हाँ ये इतने खर्चे, बिकॉज इतने 50 खर्चे होते हैं महीने भर में, आपको याद नहीं रहता दिमाग में, सो यू लिस्ट डाउन एवरीथिंग। So yeah, so I think Devesh pretty much summed it up. Also, like, biggest thing I want to add here is that know your debts. Oh, very know important. your credit Oh my card God. expenses. Yes. Know this beforehand कि या आपके पार्टनर का कोई डेट है बहुत बड़ा या छोटा या whatever, आपका कोई पार्टनर का क्रेडिट कार्ड का कुछ पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है जो बहुत ज्यादा है या कम है या whatever. Just know if there are any debts or any credit card pending payments. Know how are you going to pay it off. Yeah. Because in a lot of relationship, in a lot of couples, फाइनेंसिस को लेके बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, स्पेशली इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग, तो काफी ज्यादा झगड़े होने की पॉसिबिलिटी होती है। To avoid all of that is why you need to make your communication very clear from the start कि क्या situation है। Our belief system is that whatever we bring to the house, like Devesh said 50 रुपए, whatever we bring to the house is one pool. So ये घर का पैसा है, वो ये देवेश का पूरा पैसा है, ये मेरा पूरा पैसा है। So basically it's my money is my money, his money is also my money. Simple logic. My God, wow. मुझे याद है मेरे डेट थोड़े बहुत थे शादी से पहले, सो देन वी हैड टू डिस्कस, कीवर्ड बीइंग थोड़े बहुत, डिस्कस अमंगस्ट बोथ ऑफ अस कि तेरे डेट बहुत है तो डेट पहले क्लियर कर दे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मैरिड वेयर वी आर पेइंग डेट्स एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट मनी इन अ वेरी गुड मैनर, अच्छी चीजों में वो यूज करने पैसे। एंड आई वाज लाइक यार ये बात सही है एक्चुअली कि डेट मैंने लिया हुआ है, तो व्हाई शुड शी सफर, कि वो डेट हमारे पूल में से वो कम होता जाएगा। अगर 50 रुपए में से अगर मुझे 10 रुपए का डेट भरना है तो फिर हमारे पूल में से कम होता जा रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड पे है तो मैं इतना फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं था कि मैं मिनिमम ड्यू भर रहा था, आई वाज नॉट पेइंग द होल अमाउंट बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो दैट वाज अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ वेयर आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू पे इन फुल अमाउंट एंड नॉट जस्ट पे द मिनिमम ड्यू। सो ये चीज बहुत आगे जाके ना ये प्रॉब्लम देती है दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दैट यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड टू योर वाइफ। यू नो आई हैव टू टेल यू, सी हम बहुत ही इज्जत में बता रहे हैं क्या बात करना है। आई वेंट टू द एक्सटेंट टू कट ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड, एक्चुअली कट माय क्रेडिट कार्ड, बिकॉज़ बट लाइक नॉट इन अ वायलेंट वे और समथिंग, बट लाइक इन फनी, लाइक हम लोग को पता था हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इट वाज नीडेड, I just cut his credit card because the expenses were too much. I was splurging. I think you need to stop using your credit card. Splurging my credit card, and how? Because generations. Because also no, there's one generation rubbish. No, because nobody taught how to save money or how much to save money or how much to spend on credit card, or how to use credit card smartly. Because a lot of credit cards are used in a smarter way, then it's helpful for you also. Yeah, बहुत reward points मिलती है. But please have your own knowledge before you listen to him. Okay? Yeah. So वो सारी चीजें डिस्कस कर लो विद अ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो भी आपका होगा, वो आपको बेटर बताएगा कि किस तरीके से आपको आपकी सेविंग्स एंड फाइनेंस जर्नी को ले जाना है। Also a point that discuss beforehand whether you guys want to have a separate account, a joint account, or a mixture of both accounts. You know, just talk everything about this and be open, right? These are all discussions which are heavy, which are difficult, but if you avoid difficult conversations, वो eventually बहुत ज़्यादा heavy हो जाएगा और you know, जब आता है, जब snap करने पे आता है ना, तो ये difficult conversation ना चिल्लम चिल्ली में निकलेगा। So it's better to have all of these conversations beforehand in a very respectful manner. खास करके पैसे को लेके ना बहुत सारी चीजें होती है कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, तेरा और मेरा नहीं होता, ये हमारा पैसा है। We have to be we, not I.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स फैमिलीज. बहुत ही टची टॉपिक है गाइस. कितना भी आप बोल लो कि शादी 2 जन की होती है, नहीं गाइस, शादी एक दूसरे की फैमिली के साथ भी कुछ हद तक होती है. Especially in India, Yes. it is celebrated that weddings are, very not between two people, it's between the families. Yes. The merging of families. Yes. So it's very important to have this discussion also beforehand. Conversation over whether you are going to stay with your in-laws or stay separate is something that you need to establish before getting married, because we've seen a lot of marriages around us which people try कर लेंगे in-laws के साथ रहने का, but फिर उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद ना झगड़ के खत्म होता है सब कुछ. Because you try it out of pressure, peer pressure, कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ चांस, अगर नहीं हुआ तो वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन. तो उसमें क्या होता है कि आपने 6 महीने 1 साल गुजार तो लिए, फिर उनके बीच में थोड़ी सी कड़वाहट होती है या खटास हो जाती है, रिलेशंस फिर स्पॉइल ना हो उसकी वजह से प्री डिस्कस कर लो सारी चीजें. भले झगड़ा अब भी कर लो अपने पार्टनर के साथ और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन कर लो, ना कि 6 महीने 1 साल के बाद वैसी सारी चीजें से गुजरनी पड़े आपको. Yeah, so very important that you pre-discuss this. Another major point that you need to discuss is money with regards to families. Yeah. Say for example, as your parents start getting old, obviously you tend to take care of them monetary wise. Responsibilities towards your family, your parents. Yeah, so discuss how much money is going into each other's house. Yeah. If in case you are staying nuclear, if suppose you are staying in a joint family, then discuss again how much is going to the घर के expense, for your expense. You have that conversation. All of these conversations need to happen in a good time, good space, good bandwidth of head. Need to be having these conversations with 10,000 disclaimers firstly. Yeah. And consider that your marriage is, or your relationship rather, is like a corporate office. Just consider this. ये हमें बहुत हेल्प किया है when we consider this as a corporate, because we are very kind to each other. Like corporate में मेल्स कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, as discussed. बहुत beautiful flower email के साथ आपको present करते हैं सामने. So this is what I kind of learned from her. She is very kind towards me. एंड आई वॉज नॉट काइंड टूवर्ड्स हर. मैं जो भी मेरे दिमाग में मेरे मुंह पे है, फिर मैं वैसा ही निकलता है. मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ मेरे थॉट्स को. तो अभी ऑफ लेटली मैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहा हूँ मेरे थॉट्स को प्रोसेस करना. एंड आई थिंक दिवेश डज इट बेटर नाउ. दिवेश इज अ वेरी लाइक बेटर पैकेजिंग. ये इसका हिज वर्ड्स, योर मॉडेस्टी. no, not like for real. Now majorly this is a conversation that you need to have, is the mother-in-law conversation. It's very important. It's very touchy as a subject, but it needs to be addressed. Yeah, I think no one in our surrounding, we've seen how much ever, not many people go through this conversation. But it's very important because क्या होता है ना कि before you get married, no, everything looks very flowery and very beautiful. But once you get married, no, once you start living together is when you start to know the person. Like a mother-in-law, bahu to mother-in-law start knowing each other is when a lot of problems arises. To avoid that, it's better to have a conversation with your partner over this particular situation. As to how will you handle if there's any disagreement. What will you do if there is any disagreement? How do you take action on certain scenarios? Now in a lot of marriages, unfortunately, the husband gets really pissed between the mother-in-law and the bahu. It happens in a lot of marriages, and at that point, it becomes very difficult to resolve such issues. Because if you look at every angle, it becomes very emotionally heavy. Like mother-in-law is coming from her conditioning, her patterns, her life, her generation. Bahu is coming from कि उसने पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, वो भी पूरा घर संभाल रही है. उसके भी सारे बिलीफ सिस्टम सब कुछ चेंज हो चुके हैं यहाँ पे आके. Husband is coming from a place where he's had a fucked up day in the office, but has to come home to this drama. Everybody has their own things, own baggages behind for the problem that it's happening right now. Exactly why it's very important that you discuss all of this beforehand. Nobody is saying that ये फिर भी नहीं आएगा problems. आएगा, आ सकता है, but you'll be in a better space. Yeah, but at least you are aware that you accounted for this issue. Pre-discuss the resolution also. दैट कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रिजॉल्व करेंगे, गेट हेल्प ईदर फ्रॉम
your experienced persons, or get a therapy, or meet people who are, know this issue really well, or watch this video like this, or watch this these video videos like that we are this. going to create. Yes. So also talk about the expectations. Usually when marriage is happening, the joint family has a lot of expectations. नहीं बहू ऐसे करेगी, नहीं बहू ऐसे करेगी, नहीं बहू खाना बनाएगी, नहीं बहू ये करेगी. Talk all of these. If you're not comfortable, then you are supposed to say no. Don't fear saying no, because that's you being true to yourself. And if you're comfortable with the expectation, then that's your story, and you can have a beautiful journey with that then. Talk about all of these expectations beforehand कि सन से क्या expectations है. Probably दामाद से ऐसे तो expectations नहीं है कि वो बहुत खर्चे संभाल लेगा पूरे घर के या something like that. दामाद should not be in a compromised position then कि अरे ये भी responsibility आप. So speak about all of these things beforehand. Dowry, no. Say no to dowry. मतलब ये तो है ही नहीं. पता है वो ऐसे होता है कि गिफ्टों में बात होती है. नहीं, no. Like straight conversations. Try and have straight conversations. Like लेना देना जो चलता रहता है फैमिलीज में कि मेरे ससुराल में या मेरे मायके में क्या देना है, तो then it becomes a unsaid pressure. जो कोई बात नहीं करता किसी के बारे में कि अरे उन्होंने कुछ दिया तो हमें भी देना चाहिए, अरे उन्होंने फ्रूट की टोकरी दी हमें तो अरे नेक्स्ट टाइम हमें भी कुछ ले जाना चाहिए उतने ही वर्थ का. ये बहुत फैमिलीज में ना बिना डिस्कशन के चला ही जाता है और सालों तक चला जाता है, कोई नोटिस ही नहीं करता इसको. पर फिर अंडर करंट्स रहते हैं, अंडर करंट्स, अंडर एक्सपेक्टेशंस कि अरे इस बार तो इसने कम लाया, पहले तो इतना ज्यादा लाती थी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन टू अवॉइड दैट. उसने तो मुझे गोल्ड की चेन दी, उसने मुझे सोने का सिक्का दिया, सिल्वर कॉइन दिया, अब मुझे भी कुछ देना चाहिए दिवाली में, अरे ये लेके जाओ वो लेके जाओ. देयर इज सो मच दैट आप देख ही नहीं पाओगे कि वो यू विल बी लाइक कि सो थैंकफुल कि अरे इन्होंने इतना सारा सामान दिया. लाइक हम बच्चे अगर हमको बड़ों से कुछ मिल रहा है तो, बट ऐसा होता है कि इफ यू लुक एट, यू आर अवेयर ऑफ द होल सिनेरियो, it's not something that you should like. अगर देना है लेना है, it's a cordial relationship, then very happy do that. but अगर expectation पे कि उन्होंने कुछ दिया और 3 दिन 4 दिन 15 दिन बाद you get to hear something that कि हमने तो इतना दिया, इन्होंने तो इतना ही दिया, वो then it becomes very dirty. then से relationships खराब होते हैं, आप संभाल नहीं पाओगे then वो चीज. and exactly why these discussions are important to have. If there are any rituals, a bahu is expected to be a certain way, do certain things, speak about those rituals. बहू को सिंदूर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए, ये वो. Speak about all of this. करना है नहीं करना है is should be a joint responsibility. Even for the conversation like surname change करना है कि नहीं करना है शादी के बाद. If you are comfortable, please go ahead and do it. If you are not, then talk it out. And one more important thing which we have not mentioned, parents mediclaim करवा के रखो, बहुत important है. because अचानक के खर्चे जो होते हैं कि किसी की मम्मी की सर्जरी है, पापा की सर्जरी है, उनका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है जो कि बहुत बड़ा होता है, 4-5 लाख 10 लाख कितना भी होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है. एज योर पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर, देयर मेडिक्लेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमने जब हमारे पेरेंट्स की मेडिक्लेम करवाए तो हमको पता है कि हाउ मच टेंशन फ्री वी आर, दैट यू डोंट गेट टू हैव दोज इमरजेंसी फंड्स, उनके निकालने नहीं पड़ते. देन आपकी सेविंग्स, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जितने भी आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं मार्केट में, वो सारा आपको विड्रॉ करके देन यू हैव टू पे आउट दैट थिंग्स. तो वो प्लीज अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट. पेरेंट्स के मेडिक्लेम सबसे पहले करा के रखो, या उनसे करवा लो या आप कर लो. फ्यूचर एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं उससे आप बच जाओगे. So this is something that you need to have a discussion on. Like for example, in our journey, we already discussed whether we want to stay together in a joint family or nuclear family. Divesh actually prepped his mom for 2 years. 2 साल तक मैंने मेरी मॉम को तैयार किया था. Of course, it was not an easy thing for me also to convince my parents that I'm going to live alone. It was a lot of struggles, lot of emotional drama, रोना धोना जो हर एक मम्मी अपने बेटे को लेकर करती है. It is valid also to do that. It's valid also. It's valid also because there's a certain amount of love and attachment towards your son, of course. I mean, but then again, the decision ultimately remains between because मुझे पता था husband and a wife. Because मुझे पता था कि अगर मैं अलग रहूंगा मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहने वाली है. Because I have my younger sister also and my mother also, and Bisu comes to the family. There are 3 women that I'm dealing with and I'm the only
male person. So I didn't wanted that I could future predict myself that ki I want only one person beside me. That doesn't mean I'm not loving my sister or loving my mother. I love equally. I just want my privacy, my thing with my, with my person. I'll tell you, this is so funny that we got married on 5th March. 5th March night only we started to live separately from the Yeah. family. I didn't spend one night So at Divesh's place because it was pre-discussed Yeah. between Divesh and I. Surprisingly, the relationship now that we share with, like I share with his mom, is beautiful because वो कभी हमने साथ में रह के एक दूसरे पे कुछ थोपा ही नहीं. एक बेस्ट चीज हुई जो आई विल टेल यू दैट हम मेरे शादी से पहले मेरी मॉम के साथ मेरे जो रिलेशंस थे वो हमने कभी एक दूसरे को लव यू नहीं बोला. लेकिन आज शादी के बाद 4 साल हो चुके हैं. माई मदर कॉल्स मी एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट. आई पिक हर एंड आफ्टर द कॉन्वर्जेशन हमारी जो बात हो जाती है हम फोन रखते रखते एक दूसरे को लव यू बोलते हैं. शी टेल्स मी लव यू, आई टेल हर लव यू टू. मैं मेरे बचपन में कभी सोच नहीं सकता था मेरी माँ मुझे लव यू बोलेगी. आई गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 32. 32 साल तक हमने एक दूसरे को लव यू नहीं बोला है. लेकिन शादी के तुरंत बाद रिश्ते इतने अच्छे हो गए मेरी मदर के साथ. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट शी टेल्स मी आई लव यू and she now wants me more and more to come at her place to eat food. इसके साथ इतना लगाव हो गया है, इतना relation is so beautiful that मेरे से ज्यादा वो उससे प्यार करती है. एंड बिस्सू उसका नाम हो गया है. Also because these expectations were already clear. Yeah. Like Divesh was the person who was strong enough to take that decision that मेरे को अकेले रहना है. With his mom also it was very clear and his mom is like accepting of me so much now because she also seen the relationships change, the dynamics change. I am as a person have changed living with her. Yeah. Very understanding, very responsible, very loving, very caring. उसने ये सब मेरी मॉम ने देखा कि यार ये बंदा इतना अपसाइड डाउन चेंज हो गया तो उसने भी अपनी एनर्जी इतनी अच्छी चेंज कर दी मेरे लिए, इसके लिए, सबके लिए कि now our relation is the best of best relations I have with my mother now. Talk about your family, talk about your mother-in-law, talk about your father-in-law, any siblings that you have. Yeah. Know your priorities. Like for example, us in our therapy sessions, we take therapy. We are very pro therapy people. Yeah. We love therapy. So usually, people will think कि तीसरे जन की help लेने की क्या ही जरूरत है करके. Yeah. But no, it's important in today's time and age when there is so many stressful situations in life. Yeah. जब काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, वाइफ का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है, कुछ ना कुछ there's always happening. Career is not going properly. This is happening. That is. You need that support. You need Yes. that help. You need that guidance, or just to manage your emotions. So. In our therapy, we had learned that your primary family after getting married becomes your husband and your wife. That becomes your primary family because तुम उसी के साथ बाकी की जिंदगी बिताने वाले हो. Yes. Like till the time you die, you're with that person. So that is your primary family. Very special attention to this statement that in no way does that mean that you're abandoning your parents. Yes. No, they're still there. You still love them. You still care for them. You still are responsible for them. Yeah. But your primary family is Divesh, also like wife and husband. Like between Divesh and I, we are very clear that if Bissu खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं है. If Divesh खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं है. Our primary focus is पहले तो खुद को खुश रहना है, बाकी Divesh खुश रहना है. And then we are fine. Then we are on the same page and then this cycle can run smoothly. So हमारे टाइम पे जब मैं मॉम को मना रहा था कि मुझे अलग रहना है शादी के बाद, of course there was a lot of रोना धोना and I used to retaliate a lot कि नहीं मुझे नहीं जमेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा. And then suddenly one statement came that कि मुझे मेरे घर में नंगा घूमना है. No, यार तो मेरी मॉम ने बोला हाँ तो अपने रूम में जाके नंगा घूमना. मैंने बोला नहीं मुझे हॉल रूम में नंगा घूमना है पर्दे खोल के. एंड देन शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड लाइक अब मैं इसका जवाब क्या ही दूं, जा तेरे को जो करना है तू कर. इट्स लाइक समटाइम्स योर पेरेंट्स यू कांट फाइट विथ योर पेरेंट्स कि मुझे क्यों जाना है. लेकिन यही रीजन है मेरे को नंगा घूमना है पूरे घर में यार. मैं मेरे घर पे मेरी मॉम डैड के साथ मैं नंगा नहीं घूम सकता तो मैं शायद से मेरी बीवी के साथ नंगा घूम लूंगा. HK must have regretted this so much. The discussion level is so detailed between Divesh and I before we got married. Yeah. We call our respective parents, I mean my in-laws and his in-laws, calls by name. So his mom's name is Hina Khatri. Yeah. I call her HK.
Yeah. So it's just HK कैसे हो, HK क्या कर रहे हो, What's up, HK? Love you, what's up, HK? HK, love you, HK. So it's that, because these expectations are clear between us. There is no expectations and no pressure that he should call my mom as Ma. Yeah, I call No her Rama. expectations. He calls Rama. Yeah, He I calls call my her dad dad Bappi. Bappi with the name. I mean, I'm actually thinking now it's so beautiful. Yeah. कि मेरे को उनको पापा जी, पिताजी, That must have been so much पिताश्री, pressurizing, no? पापा, father. Are you traumatizing yourself No. right now? No. Okay. ये सब बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा है कि अरे बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन इतना ओपन रखा है उन्होंने भी अपनी तरीके से सारी चीजें कि तू बोल सकता है ये सब चीजें. You are allowed to say that. But open वो as parents इसीलिए है because हम दोनों एक दूसरे के साथ strong हैं. Yeah. You know, We are strong as a team. When Devesh and I are on the same page, when you are on the same page as your partner, there is absolutely no person who can have issues with whatever you're doing. Yeah. Because कोई जब वही है कलेश ना, नहीं कर सकता. what is that dialogue? जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी. ये इसको आता नहीं था, मेरे से बुलवा रही है. The next point we wanted to address is communication and conflict resolution. Again, very important and powerful conversation. Because शादी आप कर लोगे या relationship में भी, right? झगड़े बहुत होते हैं. It's like majority of the part होता है कभी कभार झगड़ा, you know? Where you're just fighting. So now you have to understand कि मेरे partner का या partner has to address कि हम दोनों का communication style क्या है, हम कितनी चीजें एक दूसरे को बताते हैं. जब हम झगड़ते हैं तो what is our way to resolve that? Yeah. Like we mentioned earlier, right? कि relationships are like corporate. अगर आप ऑफिस में इतने इज्जत से या फ्लावरी ईमेल के साथ किसी के साथ बात करते हो तो हम घर पे तो कर ही सकते हैं ना, because that's the person we love. तो वहां पे तो पहले निकलना चाहिए. So you just package whatever you're feeling in a better way and you have the conversation in the most kindest manner. But this also, all of this should be spoken about. कि what is your communication style? What is your, एक तो communication तो you need to keep everything clear with each other. Everything, all cards open. ऐसा नहीं है कि तुम कांदा हो. अपील करते जा रहे तुम्हारी रियलिटी अभी तक नहीं निकली. तो ऐसा मत करना. कांदे को खोल लो, चॉप कर लो, डाल दो तेल में. इसको भूख लगी है गाइस. So just be open, don't be a कांदा. Be an अंडा. काट दिया, खुल गया, खत्म. Yeah, open. अब उसको भुर्जी बनानी है, स्क्रैम्बल्ड है, You are hungry. या ऑमलेट बनाना है, आपके ऊपर है. We had this entire belief system, okay? Actually, we didn't have it. I had this entire belief system. What? कि सोने के पहले सब resolve करना है. Oh yeah. You know, फिर हम 4 दिन तक सोते नहीं थे. हाँ, ये काफी सालों तक चला हमारा. I think we were told once you get married, you cannot sleep without resolving a fight. तो अब 4 बज गए, 5 बज गए, resolve ही नहीं हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं. मैं इसको तू तड़ाक सुना रहा हूँ, ये मेरे को तू तड़ाक सुना रही है. हम एक दूसरे पे बरसा ही रहे हैं, शांति तो है ही नहीं. And I'm like, ये क्या, ये कहाँ जा रहा है यार? मेरी आंखें लाल हो गई, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोना है यार. ये कल भी तो कर सकते हैं. So then slowly, steadily, as we went into therapies and हमने बहुत समझा कि एक दूसरे को स्पेस दे दो. Yeah, it's okay to sleep off. मतलब ऐसे कि 4 हफ्ते मत लगाना उसको. 4 घंटे 6 घंटे नेक्स्ट डे सुबह को बात कर लो, नींद पूरी कर लो अपने आप की. And also like there are different styles, okay? So there are 2 types of people in a relationship and usually यही dynamic होता है, ठीक है? आप आपके partner के साथ check करना है, ठीक है? कि Devesh is a person who has avoidant attachment style. What I have is I am the anxious attachment style person. Avoidant attachment style का मतलब ये है कि Devesh को अपना space चाहिए रहता है. Whenever we get into a very difficult conversation, he needs that space to calm off, to cool off. He wants you to go for a walk. To not right now get into the conversation, he'll probably take that time off, get into the better zone, come back stronger to me in a kinder way. He needs that. That's called avoidant attachment style. I am the person who has anxious attachment style. मतलब मी को चाहिए कि अभी का अभी बैठ के resolve करेंगे हम सब कुछ. तेरा दिमाग खराब है, अभी resolve अभी बात करेंगे, अभी करेंगे, जो भी बात करना है अभी करेंगे, इसके पीछे मैं आऊंगी. So for me it's like कि नहीं, let's put our heads together and resolve it today, right now, at this moment. मेरा हमने भी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी है इस चीज को लेके कि यार कोई बात नहीं यार, कल कर लो यार, कोई बात नहीं, ऐसा 4 दिन 6 दिन बाद नहीं करेंगे. We came to a midway then. We understood that avoidant मतलब इतना भी नहीं कि he takes days to come back to me. And anxious मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को अभी resolve करना है. You give that space. So that's how you now understand better. You understand each other's patterns, you know. ये बहुत ज्यादा आप शादी के बाद भी समझ पाओगे. But like while in the
a relationship, if you are able to identify these things, then you are in a better place to resolve your issues. And आप खुद ही notice करना कि जब झगड़ा होता है तो what do you do? Do you want to resolve it at that moment or do you want to take some time off? You will understand कि दूसरा person जो है ना वो opposite है. ये major dynamic होता है. Yes. Majority of the comment में बताना हमको. The next thing is communication. Now Devesh and I, everything is like an open book in front of Devesh and I, between us. Everything, whether it's past, whether it's future कि हमारी goals, aspirations क्या है, whether it's present. He knows what I know what he knows. Even our closest friends and families. If बिस्सू के साथ कोई discussion हुआ है, that's for sure reached to Devesh. It's very clear, it's very evident. We have reached to that point where we cannot keep secrets, and you shouldn't, right? While whatever conflict is happening, do not forget to be kind to each other. Not to forget, end of the day, that you love that person. The person. Yes. And your ego is not important and will take you nowhere. Devesh की ego initial years में बहुत ज़्यादा थी, पर then मेरी भी कम नहीं थी, मेरी भी थी. But then it took us a long time to understand, to let go of that ego and look at the bigger picture that we love each other. Ego ने marriages end कर दी हैं लोगों की. We have seen in our experiences, ego सर पे चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब ईगो से ऑपरेट करने लगते हो. You have to come back, you have to realize, you have to be aware that कि ये ईगो आ रहा है. ईगो को चढ़ने मत दो. Ego loves fear, ego loves control, ego loves problems. So realize. And this effort has to be done from both ends. Yeah. Because एक बंदा हमेशा let go करता रहेगा ना, तो वो resentment में आ जाएगा कि यार मैं ही let go करता हूँ. Yeah. You know, so it has to be from both ends. So exactly why this communication is very important. Being open is very important. You know, difficulty होगी, पर difficult conversation से ही beautiful चीजें निकल के आती है. Even this entire thing, whatever pointers we are discussing, it might sound like oh team meeting चल रही है, you know, but इसी से ही ठीक होगा. ये base है of your relationship. The next point we come on to is health and lifestyle. Yeah. Very important. Very important, because you are actually living with the person. Yes. That means you are there 24/7 for each other. There are so many habits that you actually take on from each other's life. So it's really important to know health and lifestyle level. Mental health also, physical health also, emotional health also. Talk about each other's routines. Talk about whether you're a morning person, whether you're a night person. Yes. Any given day, what does your schedule look like? Talk about those things. Talk about your fitness journey. Are there any goals? Are there any fitness activity that's going on? Talk about those things. How important is health for you in your life? Do you prioritize yourself? Do you not? Just have those discussions and probably notice it. You would understand, right? When you start noticing each other. Yeah. You know? And discuss करने से क्या होता है ना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पुल अप कर लेता है, उसको ऊपर उठा लेता है कि क्योंकि हमने डिस्कस किया है, तो ये मुझे मेरे फिटनेस गोल्स और शेड्यूल के बारे में रिमाइंड कराती है और मैं इसको रिमाइंड कराता हूँ कि मुझे वॉक पे जाना है तो ये भी वॉक पे चल लेती है, अगर इसको डांस करना है तो ये डांस कर लेती है. Talk about your eating habits. You know, how much do you like junk food? How much do you like healthy food? Talk about your medical conditions. Yeah. Very important. Before you get married, after you get married, whenever. Just talk about any medical condition that the other person needs to be concerned about. Yes. Just have that open discussion. Don't shy away from those discussions. Definitely. With all of this, very important that you talk about your mental health. Have that discussion. Are you open to spirituality? Are you not open to spirituality? I think yoga, meditation, all of these things keep your physical and mental health at top. In check. If you're a person who is interested, who are currently doing meditation, yoga and therapy, you're in the A game. Devesh and I are also work in progress. Although we've had all of these discussions. Yeah, and we have these issues. But there are still issues that happen. Like I love mornings, Devesh loves nights. So that's the opposites for us. Yeah. You know, so मेरे को इसके टाइम पे आने या इसको मेरे टाइम पे आने बहुत struggle होता है. Like for example, Devesh loves walking. Like any given day he'll not skip his walking. For me it's like कि अरे you know कभी कोई मिस हो गया तो चलेगा टाइप ऐसे 10,000 15,000 स्टेप ऐसे ही मजाक में कर लूं. But like I want to also adapt this quality of Devesh, that he loves walking. You know, I want this in my life. For that Devesh sort of motivates me, but sort of also respects my time. You know कि अगर नहीं आना है तो वो respect भी करेगा मेरी choice को. When we started our therapy journey or our spirituality journey, I started it first because I understood that oh no, I need help. You know,
I need to speak to someone. Devesh initially was a little bit resistant to all of these things. मुझे लगता था कि मेरे को जरूरत नहीं है इस चीज की, मेरे को ये सब पता है. As most people think like that. Yeah. Most people. But again, like as mentioned before, therapy is required in this day and time and age. We ensure that we meditate daily, spiritual sessions that we attend, you know, it's very important to keep your energies and everything in focus. In check. Devesh initially was resistant, but with lot of communication, lot of discussions, lot of realizations, lot of awareness, Devesh has also come on the same page as me. तो होता है, कभी आगे पीछे होता है, कभी struggles होता है, but eventually you find your way only if the communication is open. Yeah. And if you're going through any problem with your partner, it is very good. It is supposed to be a strength and not a weakness to ask for help, whether from an experienced person or whether from a therapist. Not asking for help is actually a sign that you require help. Like for example, I am the eldest child. मैंने सीखा है कि सब कुछ खुद से करना है. There still is a struggle that I don't ask for help very quickly. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगी, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगी करके, you know. घर की बड़ी बेटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबको संभाल के चलती है, तो ये कैसे कमजोर हो सकती है? इसको तो स्ट्रांग रहना है. तो ये सोच कर वो बड़ी होती है और सबको संभालती है, छोटी बहन को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है, माँ बाप के प्रॉब्लम्स को भी संभालती है, लेकिन इस बीच में खुद को संभालना भूल गई. बट नाउ शी understands that after getting into therapy, after spirituality and everything, she realizes that she needs to prioritize her mental health, her physical health. So next thing that it's very important to discuss are the deal breakers and boundaries in a relationship. What are the deal breakers जिसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो in a relationship? It's very important to address it beforehand. ऐसे नहीं कि कोई situation arise हुआ तब you know हम बोलेंगे कि अरे ये तो deal breaker था मेरे लिए. So it's important to address it beforehand. It's important to discuss your past traumas. Like Devesh ने बताया, right? Because I'm the oldest daughter, तो मैं सब कुछ manage कर करके चल रही थी. And I forgot to trust somebody else with activities. The trust became a very big factor in my life that I should be able to trust. किसी ने अगर मेरा trust तोड़ा तो that is a deal breaker for me. This should be communicated that I have these past traumas. You know, you have to talk about what you're not looking in a partner. Say for example, cheating, breaking trust. If you don't give me respect, that's a deal breaker for me. This needs to be communicated beforehand. और luckily जो इसके deal breakers थे वो मेरे भी deal breakers थे, क्योंकि मुझे भी किसी ने बचपन से no one was being kind to me. Kindness is something that I need. I need love. I need kindness. I need respect. तो ये तीन चीज अगर मुझे दे दी तो अरे I'll be sorted for life. So मुझे वो इससे मिल जाती है क्योंकि मैंने clear कर लिया था, you know, before we get into this huge relationship. These are your pillars of your relationship. ये तो मतलब relationship का core हो गया ना, बुनियाद है. Yeah, like for example, there are certain boundaries, you know, that you have to maintain. For example, if Devesh is having his individual therapy sessions, I leave the room. मतलब, you know, you think, right, कि अरे पर relationship है, तुम सारे open book हो, तो सब कुछ तो share करते हो. Yeah, but like that is the level of respect that you give the other person. You know, you take the room, you have your discussion, and you don't worry about me, the other person. उसके बाद what happened in the therapy, I will check with Devesh. कि Devesh, what happened in the therapy? Would you like to share? And then Devesh would share it up front, or probably he'll take some time कि बिस्सू अभी नहीं, शाम को बात करते. You have to respect those boundaries. Like for example, this is my 1 month to go for my birthday. So this is my birthday, you know, my birthday craziness has started. So Devesh is planning a few things at his end. So he started this thing called NQA. That means no questions asked. So he'll now mention something like, you know, you can't check my phone, you can't check my diary. Because there are certain plans that's being taken care of for your birthday. Now I have to respect that. I can't still go ahead and use his phone. I have to trust him and I have to respect it. Also family boundaries के कितना हद तक हमें allow करना है हमारी families को हमारे तक आने के लिए, कि क्या ritual वो expect कर रहे हैं. हमारी जब शादी हो रही थी तो there was a certain points where we wanted to make it very clear with our individual families that इस हिसाब से होगा, ऐसा ही चीज़ें होंगी, आपको ऐसा ही करना होगा, because we are not looking here to over indulge ourselves in so many rituals that we forget that we want to enjoy the wedding also. Boundaries लो, यही करना है, इतना ही करना है, plan कर लो कि यार इतनी minimal से minimal चीजें होंगी और इसमें हम खुश रहेंगे. So this expectations also needs to be communicated. Yeah, last point but not the least. Last and the most important point in this entire list is that you need to talk about children beforehand.
whether you want to have a kid or not not. have a kid, or have 2 kids or not have a kid, because a lot of people don't have this discussion, and then it comes as a surprise कि किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, yeah. किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. So Yes. this happens a lot. Discuss whether, if you don't want kids, what are the reasons why you don't want kids. Yeah, to be on the same page. Discuss if you want kids, then what are your future plans looking like. कि तो बच्चे को पैदा करना है, बच्चे का खर्चा उठाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका आगे का फ्यूचर के खर्चे, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी. Just talk it out. Yeah. You know, it might seem too early to talk about such things, but it's better Yeah. to have difficult conversation at an early stage. To this level, that talk about unplanned babies as well. Yes. Like, for example, if you are a couple who don't want to have babies, but if there is a surprise baby, Yeah. then what would you do in that Yes. situation? Needs to be communicated. Yes. अगर Needs to be understood. Yes, if you didn't plan, suppose आपने 5 साल सोचा था कि 5 साल के बाद हम बेबी करेंगे शादी करने के बाद, because you need to build your career, you need your own time, आपको पहले दोनों को enjoy करना है लाइफ को, and then फिर 5 साल बाद आप you will welcome the baby, then suddenly दूसरे साल या तीसरे साल में हो जाता है. तो discuss about these uncertainties. तो कैसे मैनेज करोगे आप लाइफ को? So just have this open conversation, very heart to heart conversation. Where are your brains at? Yeah. Between Devesh and I, it was a very easy discussion because we both came from a place of not wanting kids. Yes. So it was not like Devesh wanted a kid and I didn't want, or I wanted, Devesh didn't want. For a lot of people it comes as a surprise कि भैया को भी नहीं चाहिए. It comes as a surprise, but fortunately for us, we were on the same page, and we did discuss this before we got into marriage discussions also, rather, that आपको you want the kid, I want a kid, no, we don't want kid. It was very easy, we had our reasons clear, and we'd probably record it. Yeah, if you want to know what kids, are the reasons behind we not choosing to have kids, Yes. comment below and we'll release that video. Yes, also. we'll happy to release that video for you guys. ये सारी टॉपिक्स जो भी हमने अपने पॉइंटर्स बताए हैं, ये सारे डिस्कस होने चाहिए अपने पार्टनर के साथ टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपको भनक भी नहीं होगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स आके आपके सर पे बैठ जाएगी एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू हैंडल, हाउ टू हैंडल. सो ये प्रॉब्लम पहले ही से ही प्री डिस्कस कर लो. ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड you will lead a happy married life ahead. And it's not about if you've married, you can still have those discussions. Yeah. So now let's wrap this video up. If you like this video and if you want more such interesting, infotaining videos, then like, share and subscribe and let us know whether you guys have had this conversation or not. Yes. See you in the next one. Bye bye.